Give me 50 days of inconvenience that you might have to face thanks to demonetization. That was the appeal the Prime Minister made to the country, but it seems the patience of the Aam Aadmi has run out rather quickly. Impatient of standing in queues waiting for their own money. The crunch is finally taking a toll on people's temper. In Allahabad, the cashier was beaten. In other places, trains were held up by protesting people. Is this a sign of things to come, or can we hope that at least after 50 days, things will get better? Lakhimpur Kheri, a mob of 500 people practically laying siege to an ATM. The reason? Limited cash and large number of money seekers. Allahabad. A mob beats up bank cashier when he rations out the money available to him. Delhi. A man claims he was beaten only because he criticized demonetization outside an ATM. And these are not isolated instances. Across the country, people's patience seems to be wearing thin, with more than a month having passed and the cash crunch showing no signs of easing. The desperate response has ranged from angry fights to trains being stopped in protest. The situation was best illustrated in Lakhimpur Kheri. A free-for-all broke out in an ATM where some people withdrew cash using multiple cards. The impatient crowd outside couldn't take it anymore and broke down the door to the ATM itself. पब्लिक ज्यादा थी, तोड़फाड़ कर रही थी, शीशे से तोड़ दिए सब। अंदर जो एटीएम लगा उसको तोड़ दिया गया। भीड़ रहती है, बहुत भी ज्यादा भीड़ रहती है, 500-600 आदमी था। The anger though is not limited to consumers alone. On a short fuse, now bank employees are lashing out. Best seen in Allahabad, where bank customers got into fisticuffs with the cashier who told them that they would only get part of the cash they are entitled to. Soon, the cashier got his men into action, with blows being rained by both sides. Over 40 days gone, changing regulations have only added to the people's restlessness. Will they be able to keep calm as demonetization reaches its last mile? Bureau Report, India Today. But then there is the other side to the story. Remember, just a week into demonetization being announced, India Today's team has visited the village which has been adopted by the Prime Minister himself. What we witnessed at the time were angry queues outside banks which did not have enough money to go around. We decided in the last leg of the 50-day deadline, we should revisit Jaipur, see what we found. We're at Jaipur, the village that Prime Minister Narendra Modi adopted. This is supposed to be an ideal village now. But what is the sense of the problem that they're facing after demonetization? Let's get a sense of that. So two banks here, back to back. The first bank one and then a bank two right there. So we'll just give you a sense of the kind of queue. Very few people standing here. Let's talk to them. We're going to show you, does the common man here feel the pinch of demonetization, और are they standing with the Prime Minister's decision? आप लोग बताइए, आप लोग भी पैसे लेने आए हो सब लोग, कोई दिक्कत हो रही है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आते हो यहाँ कैश मिल जाता है, ज्यादा लंबी लाइन नहीं रहती। या सब नहीं, शुरू में थी क्या लंबी लाइन? हाँ पहले थी लाइन, अभी थोड़ा कम हो गया है। 1500 का नोट तो नहीं था किसी का पहले से? आप बैंक की तरफ से है? पब्लिक है। कितने निकाले? 8000 रुपए। बहुत आराम से यहाँ चल रहा है, बहुत आराम। अच्छा, आपने बैंक के अंदर से जाके ज्यादा पैसे निकाले हैं, कितने निकाले? अभी 8000 निकालना है अभी। अच्छा 8000। हाँ, वे लोग लंच कर रहे हैं, लंच करके खाली हो तो 8000 निकालेंगे। दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा पैसा मिल रहा है और इसमें एटीएम में पैसा है। यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर है या किसान है जो खेतों में काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को दिक्कत हो रही है? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत। ये गांव बदला है या पहले से ज्यादा परेशान? पहले से कुछ तो बदला है, यहाँ तो बदला है, बैंक नहीं था और यहाँ भी इतना विकास नहीं हुआ था, पहले से कुछ अच्छा हुआ ही है। तो क्या बैंक सिर्फ खुला ये अच्छा हुआ है या रोजगार का कुछ साधन मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि अलग से प्रशासन की नजर है? क्या बदला? सब कुछ तो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, मतलब जो भी पहले कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था यहाँ पे, और उन्होंने गांव गोद में लिया और उससे ज्यादा विकास के
सबके ध्यान यहाँ पे आया था बस। आप लोग बताइए, फैसला अच्छा है नहीं है? फैसला अच्छा है। दिक्कत हो रही है? दिक्कत थोड़ा बहुत तो हो ही रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। क्या परेशानी, किस तरह की परेशानी? लंबी लाइनें लग रही हैं। हाँ। अब तो लाइन छोटी हो गई है। हाँ, अब लाइन छोटी हो गई है। हाँ, अब ज्यादा। बताओ कि ये जो खेत वेत में मजदूर काम करते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है? हाँ, अरे एकदम पूरा खाता खुल नहीं रहा है। देखिए अभी तुम परेशान हो रहे हैं। आप खाता खुलवाने के लिए आए हो? खाता अंदर गए थे, क्या बोला? बारह तो काफी देर से कर रहे हैं, अब ले रहे हैं 3 घंटे लगा दिया अभी तक ले। जी सर, जी मैम। परेशानी ज्यादा है या अच्छा फैसला? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं है मैम। कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। दिहाड़ी मजदूर वगैरह को जो यहाँ पेमेंट करना होता है वो सब मैनेज हो रहा है जी। गांव जयपुर बैंक नंबर 2, दूसरे बैंक में हम पहुंचे हैं। बिल्कुल अगल बगल ये दोनों बैंक हैं। दिक्कत हो रही है, सिंडिकेट बैंक में आप लोग पैसे ले रहे हैं, लाइन यहाँ लगभग नहीं है, 3-4 लोग ही सिर्फ। जी, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अच्छे से पैसे निकल रहा है। कितने निकाले आपने? नोट निकल रहे हैं आराम से। 2000 का नोट चल रहा है जी, आराम से, खुले मिल रहे हैं जी। मार्केट में ले जाओ, थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा झेलना पड़ रहा है परेशानी, लेकिन चल रहा है आराम। प्रधानमंत्री के फैसले के साथ है एकदम। हाँ, एकदम साथ। आपके पैसे मिल गए? कोई एतराज नहीं है। आपको लगता है हाँ। अच्छा फैसला है? हाँ ठीक है। क्या करते हो? पढ़ते हैं। स्टूडेंट? क्या पढ़ रहे हो? BA। आप? MI कर रहे हैं। कहाँ पे? हम मगरांस करते हैं। तो यहाँ पे आते हो, यहाँ पे जो आसपास लोग बोल रहे हैं सब क्या बोल रहे हैं कि फैसला अच्छा है? हमारे हिसाब से तो ये फैसला अच्छा है। हमारे हिसाब से भी ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है? ज्यादा दिक्कत नहीं है। काला धन आएगा? यस, काला धन आएगा। अगर लड़ रहे हैं तो हम लोग भी लड़ेंगे। हंस क्यों रहे हो काले धन के नाम पे? क्यों, काला धन तो आ ही रहा है। अगर लड़ रहे हैं, अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। काला धन वापस आएगा अगर वो चाहते हैं काला धन आए। ज्यादातर ये सब प्रॉब्लम बड़े लोगों को है, छोटे लोग इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बोल रहे हैं कि ज्यादातर प्रॉब्लम है छोटे लोग को, छोटे लोग बहुत आराम से हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि छोटे लोग, बड़े लोग ये देख रहे हैं छोटे लोग के आड़ में अपना जो काला धन वो छिपाना चाहते हैं कि बड़े लोग परेशान है, लेकिन बड़े लोग ज्यादातर परेशान है, छोटे लोग नहीं परेशान है, एकदम बिल्कुल नहीं परेशान है। कभी कभी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही हो तो अपना झेल रहे हैं, परेशानी अपना समझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ। वो जो अच्छा किए हैं अच्छा कदम उठाए, कोई उसमें गलत कार्रवाई नहीं किए हैं। Amazing, isn't it? The diversity. Some people fighting over money in ATM queues, others saying we will stand in queue but weather this storm. Now, one thing no one can deny is that there is limited new currency to go around. One way to make sure that the truly needy get this money is for more and more people to go the digital payment way. The Prime Minister himself has urged people to go cashless, but how many people in government institutions have actually paid heed? Judge for yourself after watching this report. ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ई-वॉलेट के लिए, डिजिटल करेंसी के लिए, मोबाइल बैंक के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। The Prime Minister's message is clear. Go cashless, go digital. Government offices then should be at the forefront of this movement. But what's really happening? Prime Minister's promotion of Mera Mobile, Mera Bank, Mera Batwa is there. People are lining up at the cash counter here at Shastri Bhavan. That's the nerve of the government offices and ministries, and people are lining up. We'll just check with them. What are they paying? You can see people queuing up. There are notes of tens. So what have you ordered, ma'am? 2 teas and 1 namkeen packet. So how much is the bill then? It is 16 rupees. 16 rupees. Did you attempt to pay by card? I don't think they have that facility of taking the money through card, so I'm paying by cash. The canteen staff cites the subsidized rates to justify why they lack the facility of credit cards and e-wallets. बिकॉज कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। 35 या 45, लास्ट मिनिमम लोग 45, लास्ट रेट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई 50 रुपीज़ के लिए अपना कार्ड तो लाएगा नहीं। What's more alarming is that some government employees don't believe in the very concept of going digital. आपने कुछ अपना पेटीएम वेटीएम खोला है? कुछ कार्ड वार्ड है आपके पास? क्योंकि आजकल जैसे मोदी जी कह रहे हैं मोबाइल को बटुआ बनाइए, तो कुछ हुआ उस तरह से किया आपने? नहीं, मैं तो पासबुक है मेरे पास, तो उसमें मैंने एटीएम, उसमें धोखा लगता है। धोखा लगता है क्योंकि मैं नकली नोट आ सकते थे। आपको टेंशन रहती कि नकली नोट आ जाएंगे? हाँ, इसलिए मैं पासबुक रखता हूँ।
Just kilometers away from Shastri Bhavan is the capital's biggest government hospital, the All India Institute of Medical Sciences. Patients complain that the only currency accepted is cash, hard cash. बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई भी इंतजाम ऐसा नहीं है, खुद आप अपने पैसे लेके आओ या बाहर जाओ, नहीं कोई और चीज़ों का कोई अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो पैसे ही नगद ही चल रहा है, यहाँ कहाँ स्वैप मशीन। In principle, the concept of going cashless may sound fantastic, but instances like these show the yawning gap between what's desirable and the reality. With Moshmi Singh in Delhi, Bureau Report, India Today. Every time anyone is inconvenienced for money, there is only one thing that gives them some solace. That 50 days is all they have to bear it for. But your problems may just last longer, because here is what SBI chairperson Arundhati Bhattacharya told us when we were speaking to her earlier in the day. How long is this cash crunch going to last, ma'am? Very difficult to say at this point of time. But I believe anything like this will take some period of time to disappear totally. It's not something that can happen overnight, because there is again no magic potion that will enable us to replace all of it overnight. You've recently spoken about a levy on cash transactions to incentivize digital payments. It was something that former Finance Minister Mr. Chidambaram did in 2005 last. That's right. Do you believe that the NDA should adopt a similar strategy, that you will charge me a levy, put a levy on a cash transaction to incentivize digital payments? See, for the bigger value transactions, certainly. I don't really see why large value transactions should happen on anything other than the digital or electronic channels. The small value I can understand. For the small value, sometimes it is difficult because they may not have connectivity. It may be in some portion of the country where there are difficulties in communication. And the full conversation with Arundhati Bhattacharya with Rajdeep at 9 p.m. Don't miss it. Meanwhile, there have been several back and forth moves by the RBI ever since demonetization was announced. And for good reason, it is now being called the Reserve Bank of India. With just over a week to go for the December 30 deadline to deposit old notes, the RBI has once again changed its own notification barely 48 hours after it put the common man in a tizzy by asking people to deposit over 5,000 rupees in one go. Otherwise, prepare themselves to be questioned by two bank officials. हमारे बीबी के पास रखा हुआ था कैश, कुछ तो हमने पूछा, कुछ बचा तो नहीं। लास्ट स्टेटस जमा कर दे सर, तो मैंने निकाला तो 20,000 रुपये के बाद निकला हुआ सर, रखा हुआ, वैसे मैं सर जमा करने लाया हूँ। For 48 hours, people grappled with RBI's decision making deposits over 5,000 rupees, a one-time thing and liable to questioning. मैं आया बैंक में, सुबह 8:30 बजे लाइन में लगा, मैं चेक लेके गया अंदर में, तो मैनेजर ने बताया इसका आईडी लाओ। आईडी ला के बोल रहा नहीं आप नहीं देगा, हमारा सिस्टम चेंज हो गया। भीड़ की वजह से अवॉइड कर रहे थे कि काहे के लिए जो है जान के अननेसेसरी क्राउड क्रिएट करने से क्या फायदा है। The outrage even had the finance minister making a statement contradicting the RBI. Up to 30th, everybody can deposit his old currency. Now there is no scope further for earning old currency, because all exemptions have been phased out. So whoever has got old currency must go and deposit it in one go. Today, the RBI was forced to make the biggest demonetization U-turn yet. RBI's latest notification rolls back the decision that only one deposit of over 5,000 rupees could be made till the 30th of December. And that too with a lot of questioning, provided the account is KYC compliant. The opposition expectedly was quick to latch on to the latest flip-flop. Reserve Bank of India has now become the new Reverse Bank of India. Reserve Bank of India has made itself a laughing stock, not only before the entire country but before the entire world community. एक साथ जाएं और बैंक में जमा करा दें, किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की पूछताछ उनसे नहीं होगी, तो ये हमारी सरकार के लिए हम अभिनंदन देते हैं। The anger was also palpable among people who are struggling to stay updated with the RBI's ever-changing norms.
I think the PMs and the RBI's Mann Ki Baat should reach to the last person on the street. I'm totally dissatisfied with Modi policy. They are harassing the people. They are saying that KYC is mandatory, cannot deposit more than 5,000. This is not right. Persons holding old notes of 500 or 1,000 rupees can deposit these notes in their bank or post office. The RBI's latest flip-flop has caused more confusion among the citizenry, and with little more than a week to go for people to deposit their old notes, all eyes on whether this will in fact be the last of the alterations that the government makes. Bureau Report, India Today. And you know what's strange? My colleague Rohit reports from Patna that all the banks there are still asking people to fill a questionnaire if they want to deposit more than 5,000 rupees in OGO, despite the rollback from the RBI. We're certainly hoping that that will be looked into. Well, for one, the Prime Minister had promised that the rich and the corrupt are going to cry after demonetization. At least we see a sliver of that today when the Chief Secretary of Tamil Nadu was raided by the Income Tax Department with cash and gold being seized from his son and relatives. The raids have kick-started, naturally, a massive political storm, with the TMC alleging that this is part of a witch hunt. Income tax officials, senior police officers, even central armed police personnel, all converged at this top bureaucrat's house at 5:30 this morning. Ram Mohan Rao, Chief Secretary Tamil Nadu, also the Chief Minister's right-hand man. Raids recover 5 kgs in gold bars and 30 lakh rupees, including in new currency. In a shocking incident, an IT raid has been issued on the Chief Secretary of Tamil Nadu, and more shocking is the fact that his chamber in the Secretariat is also being raided now. This shocking incident has started off after a tip-off was given by Shekhar Reddy, an associate who was actually being raided a couple of days back, where more than 100 crore rupees and also 20 kgs and more worth of gold was seized. Reddy has also been arrested for allegedly illegally hoarding more than 125 kilograms of gold and over 100 crore rupees, some of it in new currency. The raids at Ram Mohan Rao's house, who's also the State Vigilance Commissioner, have turned the heat on the AIA-DMK government, which is already battling a leadership crisis. We have been complaining about this corruption, this rampant corruption in this ADMK regime for the last 4 years. We gave a lot of complaints about specific instances to various central agencies, but no action was forthcoming. At least now they have woken up and they have started these actions. But other political leaders soon jumped to AIA-DMK's defense. Mamata Banerjee called the raids vindictive, unethical and technically improper. The Bengal Chief Minister demanded raids on the BJP President Amit Shah. Let me also ask Mamata ji that since you have decided to fight for the corrupt people, please explain whom you are trying to shield in Bengal. We all know that you are the queen of corruption. Sharda and Narda, we all know, but at the same time, another scam of a chit fund has come and the CBI is investigating. That is the Rose Valley.